Welcome, dear students. A very good morning to all of you. Today we are going to discuss the comprehension section of lesson number lesson number 12, Sunrise. It's a poem written by Padma Sajdev. If you have a book before you, please open page number 107, discussion section under the title of comprehension. But before we will discuss, I would like to suggest one thing for you. It is corona pandemic, which is creating a devastating effect on human society everywhere in the world, including our state Jammu, including our Jammu and Kashmir. So maintain all shops and don't take it easy, take it very serious. Avoid participation in big gatherings so that you could save yourself and your family, parents, siblings, neighbors, friends, relatives. It's very important, and advise the same for the others. Thank you very much. Let's go direct to our topic. The sun is compared to cataract because the correct option is number 2. It's not clear and is covered by clouds. Question number 2 is, why was the sky thundering? Who was it angry with? स्काई क्यों गरज रहा था और किससे ये नाराज था, किससे ये गुस्से में था? The response of it may be, the answer of it may be, the sky was thundering with sun. Sky was thundering because it was very angry with sun. Why it was angry? Because the sun was slow in coming out of the clouds. It was very slow in coming out of the clouds, and this is because the sun was very angry and therefore it was thundering. Next question is question number 3. What does the poet compare the sun to as it comes out from behind the clouds? Why? Answer is, it is compared, the sun is compared to schoolboy who reaches late. His school teacher or schoolmaster or class teacher gets angry for his late arrival. The comparison is made because the sun is getting late in coming out of behind the clouds. Who questions the sun? Question number 4 is, who questions the sun? Why? It's a schoolmaster. Schoolmaster is a personified form of sky. It questions the sun. The sky questions the sun as the later has risen rather late. It is afternoon.
and it is descending the sky. Means it is taking the course when where and the sun is going to set. And what was the sun's response? It's question number 5. What was the sun's reply? The sun's reply was that he makes it clear there should be no point of annoyance. One should not get annoyed over my late arrival, because whenever sun rises, it means sunrise, whether it is morning or evening time. And this clearly shows that sun is very arrogant and proud for its splendor and brilliance. What adjectives would you use to describe the sun? It's question number 6. It's comprised of two parts, part A and part B. When it emerges from behind the clouds, when it emerges from behind the clouds, the adjectives used are tremorous, cowering, and trembling, etc. The adjectives when it is shining in all its splendor, or arrogant, proud, important means gustak, saucy, glorious, and gorgeous. Next is poetic techniques. A simile is a figure of speech in which one is compared to sun is simile is a figure of speech in which one thing is compared with another, always using as or like. For example, no dim, no red, no like hearts or had the glorious sun of rise. This rhyme of the ancient mariner of Coleridge. List simile is used in the poem. समली एक फिगर ऑफ स्पीच है. समली जो है ये ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जब आप कंपैरिजन करते हैं, कंपेयर करते हैं चीज़ों को, तो आप एज और लाइक का इस्तेमाल करते हैं एग्जाम्पल में. मिसाल के तौर पर नॉर डिम नॉर रेड लाइक द गॉड्स ओन हैड, ऐसा कुछ. इसी तरह से यहाँ द ग्लोरियस सनराइज, द राइम ऑफ द एंशंट मैरिनर बाय कोलरिज. अब हमें बताया गया है कि आप जो भी समरीज हमारी पोएम में दी गई हैं इनको आप देख लें. आप पोएम निकालिए, पेज 105 और 106 पर नज़र दौड़ाइए. पद्मा सचदेव ने वहाँ पर ये सिमिलीज यहाँ इस्तेमाल, उसने इन सिमिलीज का यहाँ पर यूज़ किया है. सिमिलीज क्या है, मैं लाइन भी आपको पढ़ लूँ किस लाइन में क्या है. कौन सी, ये लाइन नंबर 1 है, वहाँ सिमिलीज का इस्तेमाल किया गया है. द सन वॉज डिसेंडिंग लाइक ए कैटरैक्ट इन द आई ऑफ स्काई. ये फर्स्ट सिमिली का इस्तेमाल किया गया है. फिर से मैं दोहरा दूँ, द सन वॉज डिसेंडिंग लाइक ए कैटरैक्ट इन द आई ऑफ स्काई. फिर आप यहाँ ऊपर वाले स्टेंजा में 5 लाइन्स हैं, नीचे आप आइए, बॉटम में फिर 5 लाइन्स हैं. यहाँ पर है पुश द क्लाउड्स अवे इन क्रेप्ट आउट लाइक स्कूल बॉय क्विकली एंटरिंग. ये दूसरी सिमिली है, लाइक का इस्तेमाल किया गया है. ऊपर भी लाइक का इस्तेमाल किया गया है.
दो जगह पर क्या है, लाइक का इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 पे है, in poetry the metaphor is an expression which describes a person or object in a literary way by referring to something that is considered to possess the similar characteristics to a person or object you are trying to describe। एक और पोएटिक टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है जिसे मेटाफर कहा जाता है। मेटाफर एक पर्सन को ऐसे या किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे ज़ाहिर करता है, ऐसे दिखाता है कि इसमें सिमिलर प्रॉपर्टीज, सिमिलर फीचर्स या सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं जैसे किसी और पर्सन में दिखाए जाते हैं, जिसका इसके साथ कंपैरिजन होता है। मिसाल के तौर पर ऑल द वर्ल्ड इज़ ए स्टेज एंड ऑल मैन एंड वोमेन merely players, they have their exit and their entrances। विलियम शेक्सपियर ने लिखा है as you like it में। In this example the world is compared to a stage and aim is being described the world by taking a well-known attributes from the stage। An extending metaphor is a metaphor that continues into the following sentences. It is developed at great length, occurring frequently in throughout a work। For example, if one starts with the metaphor of the seeds of the discontent have already been sown, an extension could be, it remains to see whether weed or flower will spring forth। Identify the metaphor used in the poem Sunrise। Is it an extending metaphor? Why not? हमें भी इसी तरह से मेटाफर को देखना है कि कौन सा मेटाफर पोएट ने इस्तेमाल किया है। अगर वो मेटाफर है, क्या वो एक्सटेंडिंग मेटाफर है, नहीं है, अगर है क्यों है, अगर नहीं है क्यों नहीं है, ये हमें बताना है। तो आप को मैं बता दूं कि पहले एक्सटेंडेड मेटाफर, पहले मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। इन पोइट्री अ मेटाफर इज एन एक्सप्रेशन as it is given in the book which describes a person or an object in a literary way by referring to something that is considered to possess the similar characteristics to the person or objects you are trying to describe। All the world is a stage, the world is compared to a stage, but it is a direct comparison। there is no use of like or as extra, which always happens in the matter of simile। Likewise, all the men and the women are merely players, there have no exit and entrances। An extended metaphor is a metaphor that continues into the following sentences। It develops at a great length, occurring frequently in and throughout the work। एक्सटेंडिंग मेटाफर वो मेटाफर होता है जो मेटाफर का इस्तेमाल करके भी जारी रहता है। मिसाल के तौर पर इफ़ वन स्टार्ट्स विद अ मेटाफर ऑफ द सीड्स ऑफ द डिसकॉन्टेंट हैव ऑलरेडी बीन शोन। ये मैंने पहले ही पढ़ लिया, अब इसका रेस्पॉन्स आप कोर्स से देख लो। जो सनराइज मेटाफर है, सनराइज है, इसमें presents the image of the sun as one of the feeling gloomy in forlorn behind the clouds। सन के बारे में बता दिया गया है ये ग्लोमी है और forlorn behind the clouds है। ये लाइन नंबर 4 में इस्तेमाल किया गया है। It began to look drenched and forlorn as it was thundering in anger। वहाँ पर ये दिया गया है
As it creeps out from behind the clouds, it emerges shining in all its splendor. It emerges shining all its splendor. ये लास्ट पैरा में फर्स्ट लाइन में इस्तेमाल हुआ है. The metaphor of the sun being the school going boy and the sky being the schoolmaster is an extended to end where the sun its all glory says to the master sky. अब एक्सटेंडेड मेटाफर क्या है, जहाँ पर सन को कंपैरिजन कर दिया गया है, सन को सिकाई को कंपैरिजन कर दिया गया है एक स्कूल मास्टर के साथ, और सन को कंपैरिजन किया गया है एक स्कूल बॉय के साथ जो देर से आता है और इसका मास्टर गुस्सा करता है. जहाँ पर वो कहता है व्हाट्स द पॉइंट ऑफ गेटिंग इनाइड, देयर इज नो सेट टाइम फॉर द सन, व्हेनेवर सन राइजेस दैट इज सनराइज. ये पेज नंबर 106 पे है. इस मेटाफर का इस्तेमाल किया गया है और ये लाइन नंबर 4, 5 and 6. Where have you all been all this while? Was your slate not clear, and did you not get enough to eat? Is this time for the sun to rise? Is this not for the sun to rise? There is no time for the sunrise. Is this you give me a minute so that I will thoroughly go into the contents of the poem. Now, this has been described in the final line. What's the point of getting annoyed? There is no set time for the sun to rise. Whenever it rises, that is sunrise. This is extended metaphor is given in the final 3 lines of the poem. जो आखिरी 3 लाइन्स हैं वहाँ पर इस्तेमाल किया गया है एक्सटेंडेड मेटाफर का. यहाँ पर क्या है कि फिगर्स ऑफ स्पीच को हम थोड़ा गौर से देखेंगे. कौन से फिगर्स? ये हो गया जो हमने डिस्कस कर दिया. 2 फिगर्स ऑफ स्पीच थे. एक था समली एंड दूसरा मेटाफर और एक्सटेंडेड मेटाफर. लेकिन फिगर्स ऑफ स्पीच में क्या इस्तेमाल होता है, क्या नहीं इस्तेमाल होता है, इसको थोड़ा हम डिस्कस करेंगे. एंटीथेसिस एंड ऑक्सीमोरन. ऑक्सीमोरन एंड एंटीथेसिस 2 फिगर्स ऑफ स्पीच है. एंटीथेसिस 2 चीज़ों का बना है, एंटी एंड थीसिस. एंटी मीन्स अपोजिट, थीसिस मीन्स थॉट्स और आइडियाज. अपोजिट आइडियाज, 2 opposite thoughts, 2 opposite ideas. When 2 opposite thoughts or 2 opposite ideas are found in a sentence used by a writer, this is antithesis. Whereas oxymoron, oxy means opposite, moron means word, opposite word. In the first antithesis there was an idea, opposition of idea.
contradiction of ideas, but there are contradiction of words. Two opposite words are found in a sentence. It is oxymoron. Now, what's the difference? Difference is, broadly speaking, antithesis is two sentences with opposite ideas. Oxymoron is two words with opposite ideas. मीन्स एंटीथेसिस में सेंटेंस पूरा, उसमें सेंटेंस टू सेंटेंसेस जिनमें अपोजिट आइडियाज़ दिखाए जाते हैं, और ऑक्सीमोरन में सिर्फ दो वर्ड्स जिनमें अपोजिट आइडियाज़ दिखाए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एंटीथेसिस में है यूनाइटेड वी स्टैंड, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल. यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल. दूसरी एग्जाम हम ले सकते हैं, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल. दो आइडियाज़ हैं. यूनाइटेड वी स्टैंड एक आइडिया है, डिवाइडेड वी फॉल एक आइडिया है. फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड. फूल्स रश इन एक आइडिया है, वेयर फूल्स फियर टू ट्रेड दूसरा आइडिया है. लेट मी बी रिच एंड वेरी, लेट मी बी रिच एंड वेरी, लेट मी बी रिच एक आइडिया है, एंड वेरी दूसरा आइडिया है. ना ऑक्सीमोरन में क्या है? ऑक्सीमोरन में देखते हैं, माई लाइफ इज एन ओपन सीक्रेट. माई लाइफ इज एन ओपन सीक्रेट. एक ओपन हो गया, दूसरा सीक्रेट हो गया. अगर ओपन है तो सीक्रेट कहाँ है? मुतजाद वर्ड्स दिखाए गए हैं. इसी तरह से शी इज द वाइजेस्ट टूल, वाइजेस्ट फूल. अगर वाइजेस्ट है तो फूल कहाँ से आ गया? बेवकूफ़ानापन कहाँ अक्लमंदी के साथ इसका कंपैरिजन किया जाता है? इट इज़ ऑक्सीमोरन. लाइफ इज़ फुल ऑफ एकिंग जॉयज. अगर दर्द है तो खुशी कहाँ है? Life is full of aching joys. When two words with opposite ideas are joined by conjunction, it will always be antithesis. अगर दो वर्ड्स में अपोजिट आइडियाज़ होते हैं लेकिन कंजक्शन इसको ज्वाइन करता है तो ये ऑक्सीमोरन नहीं माना जाएगा, इसको एंटीथेसिस माना जाएगा. मिसाल के तौर पर लेट मी बी वेरी एंड रिच, ये एंटीथेसिस है. लेकिन ऊपर क्या है? ऊपर दूसरी चीज बताई गई है. लेट मी बी लाइफ इज फुल ऑफ एकिंग जॉयज. यहां पर लेट मी बी वेरी एंड रिच. जैसे नंबर थर्ड में यहाँ पर दिया गया है, हालांकि दो वर्ड्स हैं लेकिन कंजक्शन एंड से इसको जोड़ा गया है, इसलिए एंटीथेसिस है. ये ऑक्सीमोरन में नहीं आएगा. ऊपर क्या दिखाया गया है? ओपन और सीक्रेट कोई कंजक्शन नहीं है. वाइजेस्ट एंड फूल कोई कंजक्शन नहीं है. एकिंग जॉयज कोई कंजक्शन नहीं है. अब क्या है? When two words with opposite ideas are joined by conjunction, it will always be antithesis. ये हमने आपको बता दिया. While targeting the goal of life, he met with triumph and disaster. ये भी ट्रम्फ एंड डिजास्टर दो वर्ड्स हैं. ट्रम्फ, डिजास्टर, पहली फतह फिर तबाही, लेकिन एंड से ज्वाइन किया गया है इसलिए ये एंटीथेसिस में आएगा. ही मेट विथ ट्रम्फ एंड ही मेट विथ डिजास्टर. टू सेंटेंसेस आ गए, ये भी एंटीथेसिस है. ऑक्सीमोरन में आपने और एंटीथेसिस को अच्छी तरह से समझ लिया. अब समरी
और मेटाफर को थोड़ा बहुत देखते हैं। Simile, it's a direct comparison between two different objects, things, etc. using as like. Simile का डायरेक्ट कंपैरिजन होता है चीज़ एक चीज़ को दूसरे चीज़ के साथ। इसमें एज और लाइक का इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर ही इज़ एज ब्रेव एज लॉइन, दिस रूम इज़ एज हॉट एज ए फर्नेस। जो मेटाफर है इट्स एम्प्लॉयड सिमिली, ये भी एक सिमिली की एक किस्म है। ही इज़ ए लॉइन, इसको कंपैरिजन किया है लेकिन एज का इस्तेमाल नहीं किया गया है, यहाँ लाइक का इस्तेमाल नहीं किया। दिस रूम इज ए फर्नेस। इसी तरह से एलिट्रेशन एंड रेपिटेशन है। एलिट्रेशन मीन्स ऑल प्लस लेटर्स। In this figure of speech, a letter is repeated, means sound is repeated. First letter of a word is repeated. The bright bird blew. Bright bird, हालांकि वर्ड तो डिफरेंट हैं लेकिन इनका जो ब साउंड है वो इसको रिपीट किया गया है। Four fools fell in a fountain. फोर फूल्स फेल इन ए फाउंटेन। फोर एक वर्ड, फूल्स दूसरा, फेल तीसरा, फाउंटेन चौथा। इसको हम एलिट्रेशन कहते हैं। अब रिपीटिशन क्या है? रिपीटिशन है इन दिस फिगर ऑफ स्पीच अ वर्ड और फ्रेज एक्स्ट्रा इज रिपीटेड। 2 and 2 मेक 4, किसी वर्ड को फिर से दोहराया गया है। नो स्टार इन द एयर, नो स्टार इन द सी। नो स्टार को फिर रिपीट किया गया है। उम्मीद है कि अब तीसरा है पन, प्लूरल प्लस वन। पन का मतलब है प्लूरल प्लस वन। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस फिगर ऑफ स्पीच में क्या है? वन वर्ड हैज टू मीनिंग्स, एक वर्ड के एक से ज़्यादा मतलब हो सकते हैं। द हैप्पीनेस ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन लिवर। लिवर का मतलब है इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्टमक। वन हु लिव्स, जब ऐसा मतलब आता है मीनिंग्स में दो मतलब आते हैं तो इसको हम पन का इस्तेमाल कहते हैं। द हैप्पीनेस ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन लिवर, एक मतलब ये है कि अगर आपका बॉडी पार्ट लिवर सही सलामत है तो आप खुशहाल रह सकते हैं आपकी सेहत की वजह से। लेकिन अगर आप ज़िंदा हैं तो तब आप खुशी का इजहार कर सकते हैं, ये भी इसका मतलब है। इसी तरह से टोटोलॉजी, 2 plus auto, 2 is equal to 2 plus auto means same. In this figure of speech, two words have one meaning. पहले क्या था? One word have two meanings, उसका मतलब क्या आया गया? पन। अब two words का एक ही मतलब आ गया। Sign of filth and the dirt. Sign of the filth and the dirt. Filth and dirt are synonymous. आज I think this is enough for today, because if we expand our lesson, it will take more time, and more time will create problems for us, because Doji, uploading with Doji is a very very difficult task for we people. So we conclude it here. Let's pray that we will come out of these hard times successfully with the grace of
Almighty Allah. Thank you very much.